Is Babar Azam truly crying? Is he crying? Does he actually feel the remorse of the defeat that Pakistan took from Afghanistan in yesterday's match? Is that even true? How many people actually would want to believe that Babar Azam is crying and he feels the regret and he truly realizes his mistake and he definitely admits his faults and his bad, which contributed towards Pakistan's loss yesterday. Now, that loss was quite unprecedented, not because they lost to a certain side. No, absolutely not. We feel very good about I'm sure that this will actually give a lot of encouragement to cricket in Afghanistan that they beat Pakistan yesterday, and we congratulate them quite a lot. But, however, with regards to Pakistan, you have to consider one thing for sure, and that is that Pakistan is a cricket team that has a history of cricket behind it in 50 years, 60 years, whatever it might be. It has a history of, it has infrastructure available, domestic cricket available. Now, all these things considered, Afghanistan does not have that kind of thing. It does not have any infrastructure. It does not have any kind of support. It does not have, even as far as talent is concerned, I wouldn't say that Afghanistan is at par with Pakistan or any other international team whatsoever. So that is why, whenever you call a certain side in cricket these days as a weak side or as a minnow side, it is with no disrespect to that side at all. It is just to say that that team apparently is not that much involved as far as infrastructure is concerned in cricket, and that is why you basically go ahead and call that side, a weaker side or a minnow side. And for that matter, probability of certain teams to win against certain teams is more, and that is why, for that matter, the match between Pakistan and Afghanistan yesterday, Pakistan clearly was supposed to have the upper hand, but it did not. It lost. And not only did it lose, but Pakistan lost this match one-sided. One-sided. Absolutely. Now, amidst all of this, there is news that Babar Azam is crying. He really felt that regret, he felt that remorse, and he went into the dressing room and he felt that, and by way of his press conference that he came outside, many people said that, those actually look like very sultry eyes. They could look kind of like, this is a very different kind of facial expression that Babar Azam is having. Never do we... I myself was actually quite surprised when I saw Babar Azam doing that press conference. When he was talking to the journalists, he definitely had a very different tone about himself. This was not the same Babar Azam. However, the fact that he cried, and as much stupid as it really sounds, there's a lot of hue and cry in the Pakistan media right now that Babar Azam was crying. And this has been done in such a way that there's some kind of sympathy that should be instigated for Babar Azam in this time of crisis that Pakistan cricket is facing at this point of time. I don't believe in the first place that Babar Azam was crying. I don't think he felt the remorse or the regret that he was crying. Yes, there was plenty of embarrassment, but I think if there was any regret or remorse within himself, that was moreover related to the fact that other players in the team were not, they have not played well. He himself inside is quite satisfied about the fact that Pakistan lost, yes, but well, what he has quoted, highlighted as statement to be the reason why Pakistan lost, that reason has been thrown onto the bowling side. Because he is definitely going to stand justified that, he scored 74 and he tried his very best. Because in that very press conference, he definitely said that, my performance has definitely been very, it has always been like that. I've always performed, I've tried to perform. You can actually quote his statements in the press conference in which he said that मेरी performance जो है वो तो हमेशा से ही इस तरह से रही है और मैं तो हमेशा से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा से मेरी परफॉर्मेंस जो है वो टॉप नॉच रही है, सो टू स्पीक. टॉप नॉच तो नहीं उसने बोला, लेकिन बहरहाल उसने अपने आप को यही कहा है कि his performance was basically up to the mark, and it was basically the fault of the bowling side. They did not bowl the bowling was not up to the mark, and that is why Pakistan lost. And he's completely
thrown the blame on the bowling side, not taking any responsibility for the defeat that took place against Afghanistan. Not even one little bit in that press conference that took place in the post-match of the game between Pakistan and Afghanistan yesterday, this miserable defeat that Pakistan faced, not even one little bit or any fraction bit of remorse or regret did I see in Babar Azam's tone, which was directed towards himself. It was more so about the fact that, what has this team done to me? Look what Pakistan team has done to me. Look what Shaheen did to me. Look what Haris Rauf did to me. Look, देखो जरा मेरे साथ क्या किया है, मेरे साथ क्या कर दिया. मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस ठीक दी, मेरे साथ क्या कि बॉलिंग ने मुझे हराया है और ये स्पिनर्स ने मुझे हराया. मैंने तो अपनी पूरी कोशिश, मेरे साथ क्यों किया ये? ओ चुप करो तुम चूतिए आदमी. There should be a pause here right now, definitely, because once I basically say this first, boom, Babar Azam chutiye aadmi, I think there should be a pause after this statement. I do not believe for one little bit that he even cried or sniffled in the dressing room. I do not think so, because the likes of him would never have any realization. Babar Azam, let me tell you, Babar Azam is the cousin of Kamran Akmal and Umar Akmal. And Babar Azam's issue is basically his family issue. Yes, with no disrespect to his family, of course. I'm not trying to be unethical or trying to take a nudge on his family over here, but I'm just going to talk about what I have seen with regards to the performance of Kamran Akmal over here. His very cousin, dropping catches, dropping sitters, easy, simple catches. Babar Azam is Kamran Akmal's cousin. After all, Kamran Akmal dropping catches, Babar Azam dropping matches. Oh, you... No, that's like a respectable kind of a word that I've used. However, whatever I've just stated, इसके कज़न में ये इशू था, कमरान अकमल में. बाबर आजम का जो कज़न है कमरान अकमल, वो कैचेस ड्रॉप कर देता था. Simple catch, 2011 World Cup reaches. Come and see the highlights on YouTube and you can basically clearly see the two catches that he dropped on Shoaib Akhtar's ball. Ross Taylor, remember? Those two catches actually ended up Shoaib Akhtar's career. Shoaib Akhtar was out of cricket. He had to announce his retirement. I mean, he was a smart guy to do that because Shoaib Akhtar had 2 more years left in him as a cricketer. Shoaib Akhtar definitely could have played for 2 more years as a fast bowler, as an express bowler, because his physique, his build, his overall body, his anatomy was as such that he could definitely play for Pakistan for another 2 years, that too as an express bowler, but not every one dayer. But why am I even talking about Shoaib Akhtar over here? Shoaib Akhtar long retired from the game of cricket. This is about Babar Azam and his freaking captaincy. Ye Babar Azam and this pathetic breed of Pakistani cricketers that we have. I mean, if anybody is viewing this video, and you should definitely know that they are extremely बेगैरत, इंतहा दर्जे के बेगैरत हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर जो इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में. और ये बाबर आजम इंतहा दर्जे के बेगैरत. अब आप कहेंगे मैं अपनी टीम के लड़कों को बेगैरत क्यों बोल रहा हूं? भाई बेगैरत हैं. They were more concerned about their money rather than the national cause of the World Cup. Just on the verge of the World Cup, they were basically supposed to go and play the World Cup, and right at that very point of time, at that very spot when they thought that they've been chosen for the squad, they blackmailed the cricket board. Not that I'm a big fan of PCB, please don't take me wrong on this, but I hate the PCB. Pakistan Cricket Board and its officials, they suck big time, of course. I couldn't have used a better word. लेकिन उसी टाइम पे इन क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स ने, शताब खान हो गया, नवाज हो गया, बाबर आजम हो गया, इमामुल हक हो गया, और भी जितने भी हैं, इनका तो मुझे पता ही है जिनके मैंने नाम लिए, इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा जी हमारे पैसे बढ़ाओ.
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो उनको पैसे दे रहा था, पीसीबी जो पैसे दे रहा था इन प्लेयर्स को, मतलब इट वाज डम स्ट्रक कंप्लीटली कि पैसे जो इन प्लेयर्स के बनते थे, कहते थे नहीं जी पैसे बढ़ाएं, आप पैसे बढ़ाएं। तो ये वर्ल्ड कप आने वाले हैं, आप नेशनल कॉज है, नेशनल प्राइड है आपका, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है इन प्लेयर्स को, ये जो खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, ठीक है ना, इनको पैसों की फिक्र पड़ गई। इन्होंने पैसों के ऊपर एक ड्रामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही अपना नहीं लेते, हम पैसे ही नहीं लेते, ज्यादा करके पैसे दोगे तो हम लेंगे। ये किस किस्म का ये प्रॉब्लम है, ये किस किस्म का एटीट्यूड है? डंडा सर्विस चलनी चाहिए इनके, तो डंडे मारो इनको, ठुड्डा मार के बाहर निकालो। ये नखरे करने वाली कौम, वो किए थे ना नखरे वकार यूनुस ने 1992 के वर्ल्ड कप में। इमरान खान ने जूते डंडे मार कर तबाह हो जा, तू वापस पाकिस्तान जा, कोई वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा तू 1992 का, तबाह हो जा। और फिर बैक का उसका वो it was basically done under the guise of an excuse of a back injury that supposedly Bakar Yunus had at that point of time, but this was not about a back injury. He seriously was kicked out of the team because of his attitude problems. तो ऐसे नहीं, डंडे वाली कौम है ये। इमाम नसीम साहब भी उधर टीवी के एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम से जो पाकिस्तान को ये डिफीट हुई है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है। नॉट इवन रियलाइजिंग इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोहम्मद आमिर। वो जो मोहम्मद आमिर बैठा हुआ है, वो लोएस्ट पॉइंट एक्चुअली वो लेके आया था। मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, और सारी दुनिया में फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम इस तरह से खराब किया, इस तरह से खराब किया। सारे प्लेयर दुनिया के करते होंगे। साउथ अफ्रीका का हैंसी क्रोनिया भी पकड़ा गया था, बट दैट इज नो एक्सक्यूज कि एक तो इंसिडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, तो वो करता रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान गंदा हुआ था उसमें, मतलब लोएस्ट पॉइंट इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज एक्चुअली व्हाट मोहम्मद आमिर डिड। वो लोएस्ट पॉइंट वाला जो है ना, वो मोहम्मद आमिर बैठा हुआ था उधर टीवी प्रोग्राम में। तो बहरहाल ये सेकंड लोएस्ट कह सकते हैं। आई शुडंट से दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, but I should say this is the second lowest point in the Pakistan cricket. The lowest point was, when Muhammad Amir, Salman Butt and Muhammad Asif, they actually were caught red-handed taking money from the bookies, and when they were involved in the spot fixing scandal. So that was the lowest point of Pakistan cricket. Now, amidst all of this, whatever talk is going on, whatever conversation is going on, there is definitely a lot of hue and cry already about the fact that there is a possible chance of a captaincy replacement within the Pakistani ranks. Obviously not during the World Cup. How wishful it may be for me. I would really wish it would happen during the World Cup. लेकिन World Cup के दौरान तो नहीं कैप्टनसी रिप्लेस हो सकती. I would definitely see, I think that PCB is right now contemplating a replacement of Babar Azam as a captain of the team, and he's supposed to be replaced by the likes of the left-handed Shan Masood, who is currently not even playing for the Pakistan team right now. शान मसूद रिप्लेस कर देगा बाबर आजम को, खेल ही नहीं रहा वर्ल्ड कप की टीम में अभी वो। ओके, शान मसूद कैप्टन। दीज आर रिलायबल रिपोर्ट्स, लेट मी टेल यू, दीज आर रिलायबल रिपोर्ट्स। पाकिस्तान जिस तरह हारा है तो बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई है, और बड़ा जो है वो उधर सुनने को न्यूज़ बड़ी आ रही है कि वो काबुल में तो बड़ी ठीक ठाक पार्टी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। और क्यों ना हो, इधर बातें हो रही हैं जी, उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी उनके प्लेयर ने, कि उसने कहा कि जी वो जितने भी यहाँ पर मतलब अगर इलीगल अफगानी यहाँ पर है तो उनको जो वापस भेजा जा रहा है, दिस मैन इज डेडिकेटेड टू देम। भाई वो उसको अगर ऐसी कोई वायलेशन उसने की है, अगर ऐसी कोई गलत बात अगर उसने की है, तो फिर ये आईसीसी उसके खिलाफ एक्शन ले। अगर नहीं लेता तो भाई उसने कोई गलत बात नहीं की, फिर उसने कोई गलत बात नहीं की। ये पाकिस्तानियों को बुरा लग जाता है। क्यों कह दिया जी उसने, क्यों कह दिया जी उसने? यार उसका जो दिल करे वो कहे, जो दिल करे वो कहे। ही विल से व्हाटएवर ही वांट्स टू। पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगर उसने दी है, तो पाकिस्तानी प्लेयर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे तो हाँ वो पकड़ लेते हैं क्यों उसने दी है इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो भाई ये फैक्ट है, पाकिस्तान को डील करना है इस चीज से, ठीक है। और ये सब चीज पाकिस्तान को इसलिए आके हिट ज्यादा करती है क्योंकि ना हमारा बोर्ड, ना हमारे प्लेयर, ना हमारी आवाम, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। हम पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं हैं। हम पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं हैं।
ये इसीलिए हमारे साथ होता है। बेगैरत लोगों, नेशनल कॉज, नेशनल प्राइड, वर्ल्ड कप लगा हुआ है और तुम लोगों को पैसों की फिक्र पड़ी हुई है। ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाबर आजम, तू बड़ा रोए, तू रोने वाली शक्ल है तेरी, इन क्रिकेटरों की रोने वाली शक्ल है। बेगैरत लोग, चूतिए ना हो तो रोए है जी। बाबर आजम रोने वाली शक्ल है उसकी, रियलाइज करने वाला उसका बूथा है। कोई उसको शर्म नहीं है इस बात की। अभी भी वो इसी चीज में ही अड़ा हुआ है कि नहीं, ये तो टीम ने मुझे हराया है, तो टीम ने मुझे हराया। आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, कहीं पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे ये बात बोली है, आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस ऑफ दिस मैच, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम इज अ ब्रेव गाय, ही शुड हैव डन दैट, बट he's not a brave guy, you know. He's just self-centered, self-involved. ये बाबर आजम का बाप भी इसी तरह का ही है। मतलब स्टारी और प्लेयरी जो है ना, वो सारी वो बाबर आजम को मिली है, उसका बाप भी आगे आगे आ जाता है। ऐसे लगता है कि ऐसा लगता है बाबर आजम को चाहिए कि टूर पे जाए ना, तो जो क्रिकेट की किट है ना, उसमें अपने ये बाबर आजम को चाहिए अपने बाप को भी डाल के साथ लेके फेरा करे। क्या अजीब ऑफ लगता है। ये बाबर आजम का जो बाप है हर वक्त लगा होता है ट्विटर पे, इस पे कोई बात कह दे तो बाबर आजम का बाप आ जाता है उसे डिफेंड करने। चंडे ना लगाओ इनको, कंप्लीटली ऑफ, कंप्लीटली ऑफ। ये सेल्फ सेंटर्ड लोगों की निशानी होती है, सेल्फ इन्वॉल्व लोगों की निशानी होती है, जो अपनी सक्सेस में पब्लिकली फिर अपनी फैमिली को भी बीच में लाना शुरू कर देते हैं। खैर, बाबर आजम का तो ये एक खानदानी पेशा है बेगैरती दिखाने का। कमरान अकमल और उमर अकमल वो भी परले दर्जे के बेगैरत हैं। कमरान अकमल कैचेस ड्रॉप करता था और बाबर आजम मैचेस ड्रॉप करता है। हा हा हा। अब शान मसूद की जहां तक बात है कि शान मसूद इज probably going to replace Babar Azam, it is being contemplated right now that Shan Masood might just replace Babar Azam as a captain. I think that Inzamam is never going to, whoever, this is a reliable report. There is talk right now about this. I mean, a guy who's not even part of the World Cup squad all of a sudden because of this miserable defeat that Pakistan has faced. There is talk that Shan Masood, who is not even part of the World Cup squad, is going to replace Babar Azam at this point of time. That only Pakistan can do such a thing, Pointless बेतुका, कहीं से नहीं, आमद हो गई। ठीक है, अक्ल से बिल्कुल फारिग। इंजमामुल हक कभी भी नहीं चाहेगा कि शान मसूद रिप्लेस करे बाबर आजम को, इसलिए क्योंकि फिर उसको इमामुल हक की छुट्टी करानी पड़ेगी, वरना किसकी कराएगा? फखर जमान की। फखर जमान की आप इमाम को, वैसे पता गिवन इंजमाम गिवन इंजमाम ये हो भी सकता है कि इमाम को रख लिया जाए, फखर जमान की छुट्टी कर ली जाए, शान मसूद को लाया जाए, कैप्टन बना दिया जाए। नहीं जी, इमाम को नहीं कुछ होने देगा, वो इमाम को नहीं कुछ होने देगा। उस चूतिए को जो काब खा खा के जो है वो, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट एन एम्बैरेसमेंट दिस इमामुल हक इज। और ये क्या, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या बन के आया हुआ था इमामुल हक? बेंची बना हुआ था बिल्कुल। मैं इमामुल हक को मैंने देखा, मैं समझा कोई हॉरर फिल्म चल रही है। पता क्या मेकअप मुकअप करके इमामुल हक आया हुआ है। यार कितने खुसरे हो तुम, पाकिस्तान का तो नाम खराब कर ही रहे हो, खुद भी अपने आप को खुसरा 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 दिस, खुसरा इमामुल हक, खुसरा इमामुल हक, खुसरा इमामुल हक, खुसरा इमामुल हक। ये साउथ अफ्रीका की आप परफॉर्मेंस आज देख लें, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने परफॉर्मेंस दी है। डिकॉक ने 174 मारा 140 बॉल्स पे, 174 of 140 balls, strike rate of more than 120 strike rate. Do you think Imamul Haq, being an opener, has the capability to play like De Kock and hit that knock? Has he ever done that ever in his life? वो कार्ब खाता है ना, वो कार्ब खा खा के छिके नहीं मार सकता। क्या बोंगी लॉजिक दी है यार, क्या बोंगी लॉजिक दी है यार। इनके बारे में तो इधर यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बात करके भी बड़ी शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है इनके बारे में बात करके। मजबूरी है, यूट्यूब चैनल तो चलाना है ना भाई, यूट्यूब चैनल तो हमने, ठीक है ना, शौक है ना, करना तो है, लेकिन इन लोगों के बारे में बात करें हम, ये इमामुल हक के बारे में बात करें, ये शताब खान के बारे में बात करें, बाबर आजम के बारे में बात करें, ये शाहीन शाह के बारे में बात करें हम, ये चूतिया लोगों के, ये चूतिया ही रह गए जिनके बारे में अब हमने बातें करनी है। What has the world come down to?
Pakistan has never hit such a low in cricket. But and it is being said that you can never write off Pakistan. Well, you've already written off Pakistan. Let me tell you, Pakistan, बात चल रही है ना. You can never write off Pakistan. Pakistan को आप write off नहीं कर सकते. Well, you already did that. You already did that. Fortune favors the bold. This is a cowardly Pakistan team. It will not succeed. अगला मैच भी हार जाएंगे. Thank you. Bye bye.